Indian agriculture has come a long way since the ship-to-mouth days of the 1950s and 1960s, when the country depended on food aid from abroad. It has long since become a net exporter of stuff people eat. Yet, big inefficiencies persist. Although India has a third more land under cultivation than China, it harvests only a third as much produce by value. Agriculture employs almost half of all Indian workers, some 260 million people, but contributes only 15% of output and 12% of exports. Handouts of every kind warp incentives for farmers. These giveaways weigh down production and proper practices that degrade the land, all without making anyone much richer. Yields in India are lower than the global average for almost all produce. Merely raising them to the average would make India a massive power in global commodity markets. India's excess rice production would be greater than the current global rice trade. Making farmers more prosperous would also have a big knock-on effect for the rest of India's economy. Pushing up incomes in the countryside would create demand for new goods and services, which would in turn create better jobs for India's many millions of surplus farmhands. When the whole community is divided into haves and have-nots, I think it is everybody's responsibility that each one of us, is sensitized towards the need of providing food to each and every soul on this planet. And this can be achieved if we are aware of the present scenario and take suitable steps for future development. When I say this, the UNICEF report of 2020 says approximately 3.1 million children die from undernutrition each year, which translates to about one child every 10 seconds. The World Food Programme report that malnutrition is responsible for nearly half of all the deaths in children under 5. This statistic underscores the deadly impact of hunger and malnutrition on young lives. We must understand that hunger, malnutrition is not only an humanitarian issue, it is a societal issue. It not only impacts an individual, it impacts the entire society. It is an economic issue, it is an education issue, it is a developmental issue, because people, those who are not fed properly, how can we expect that they will contribute positively towards development and towards the society's improvement? I think this should wake everybody. We must see that there is no food wastage happening. We must see that there are sustainable agricultural practices which are adopted. There are certain policies which not only help the farmers in achieving higher yield, but it also helps that the earth and the entire agriculture process is such that it is sustainable, it is developmental, it is environmentally friendly. We should also sensitize our citizens that if there are haves and have-nots, it is the responsibility of haves to look at have-nots and help them in whatever best possible they can. हाँ उमा, अरे यार कितने अरसे के बाद मिल रहे हैं फैमिली के साथ ही। हाँ जी हाँ जी। और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे मेरे दोनों इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बाहर हैं दोनों बच्चे। बहुत दिनों बाद मिले। अरे ये इनको नहीं पहचाना, ये कौन है? ये अंकुश। हाँ। पता है डॉक्टरेट हो गया। डॉक्टर। बजाज में मिल गया। और आप भी दिल्ली में हैं? दिल्ली। सबके बच्चे वाह, एक के बच्चे इंजीनियर, एक का बच्चा डॉक्टर, आपका बैंकर, वाह। तो आपका बच्चा अभी एमडी भी करना चाहता, तो खर्चा तो बड़ा आ रहा होगा यार। लोन बैंक वाले बैंक से लोन पैसे कितने कमाएंगे? अभी खर्च होगी तभी तो पैसे आएंगे। लुट्ट वाली आसानियां हो रही हैं। पर एक बात बताओ ना, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आपकी मेरठ में बहुत सारी जगह नहीं थी जब पापा है तो हाँ, तो उसको बेच दो और लोन लेने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक बोला बाबू तुमने।
और खेती वेती का बाप रे बकवास यार, है, सोचा था मिट्टी खेती होते रहो करेंगे, उसमें। अच्छा क्या करना है आजकल बच्चे हाँ। जब डॉक्टर बन गए तो क्या करेंगे हाँ, उसका? कोई जाना तो है नहीं आपके किसी बच्चे ने। खेती तुम भी तो कुछ बताओ, तो ये- खेती में करते, तुम्हारे पास भी था ना कुछ ऐसा? मैं वही सोच रहा हूँ, आप भी जमीन बेच देंगे अपनी, आप भी बेच देंगे, आप भी बेच देंगे, तो खेती किस जमीन पर करेंगे, किसान कौन बनेगा? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने किया। सही था। फिर तो वही बात हो जाएगी, बाहर से अनाज लाने वाली स्थिति हो जाएगी। ये तो है। सोसाइटी में हमारा दायित्व बनता है कि हम दूसरों की भी मदद करें। सिर्फ अपना अपना देखना तो कोई अच्छी सेल्फ बात सेंटर्ड बन गए हैं आजकल। अच्छी बात नहीं है। और आप जब समाज में देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर चौथे आदमी के पास पूरी तरह से खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो हमें ज़रूरत आज ये लग रही है कि खेती को बढ़ावा देना है। अब देखिए ऑर्गेनिक खेती की जा रही है, कीटनाशकों का उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। हरित क्रांति आई थी 1958 के आसपास। हाँ, बिल्कुल सही बात। लोगों की हम मदद कर सकें, जीरो हंगर के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें, अपना खाने को हम वेस्ट ना करें और लोगों की मदद करें, तो ज़रूर हमें ये प्रण तो लेना आइए चाहिए। हम प्रण लेते हैं। कसले कमर और हो जाए तैयार, अब की बार होगा भूख पे वार। देश मेरा यह स्वर्णिम होगा, लहलहाती फसलों से, लहलहाती फसलों से। कुपोषित ना हो कोई यहाँ, कह दो आने वाली नस्लों